Okay. Hello, guys. So it's been a long, like, what can I say? Let's go quickly dive into the charts and see what price is bringing towards us today. Okay, coming into the Nasdaq. Okay, we have the S&P 500, Nasdaq, and Dow. Index futures tried, as we all know. We just focus basically on 9:30 towards 9:30. So, what do we have the framework for today? मंडे ने बेसिकली इट वाज अ कंसोलिडेशन बिकॉज प्राइस ने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था एज यू कैन सी दिस कैंडल okay, Nasdaq, and then Tuesday expanded over the downside. So yeah, surely we can say that this is the high of the week. Okay, and then Wednesday was kind of middle of the range. Huh. Thursday, I thought, yeah, price could go higher, trade into this gap, but it didn't. And now we have the Friday. So as you can see, we are trading away from the new week opening gap. Also, true week open. True week open में किसको मानता हूँ? जो प्राइस में ट्यूसडे का ओपन होता है एवरी क्वार्टर Q2। अगर हम वीक का देख रहे हैं तो उस वीक में आप फ्राइडे को हटा दो एंड देन व्हाट डू यू हैव 4 days। यू मीन you have 4 days, and then within that 4 days you will count that as Q1, Q2, Q3 and Q4। okay, so Q4 के बाद आता है X। okay, this is Friday। फ्राइडे क्या कर सकता है? बेसिकली आईसीटी पर्सपेक्टिव से TGIF हो सकता है। ओके, सो TGIF क्या होता है? रिटर्न बैक इनटू द रेंज, वीकली रेंज, जो वीकली रेंज क्रिएट किया है। ओके, तो मंडे का वीकली रेंज क्या है? ये हाई है मंडे का। ओके, और लेट मी लुक एट सम ऑफ द सेटिंग्स इफ द सेटिंग में कुछ गड़बड़। ओके, सेटिंग लुक्स गुड। ओके, सो या दिस इज व्हाट डू वी हैव हियर। तो आज बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को, कि वो प्राइस अगर ट्रू वीक ओपन से वो दूर ट्रेड करता है किसी वीक में, तो प्राइस क्या करता है? एल्गोरिदम जो होता है वो ट्राई करता है। ओके, वी I know what you are thinking, that we have this low. Yeah, I also know that this low is a drawn liquidity, but before that, क्या आज TGIF है? क्या प्राइस रेंज के अंदर जाना चाहेगा? वो भी हमें सोचना पड़ेगा। ओके, तो TGIF का मोटिव ही यही होता है कि अगर प्राइस टू वीक ओपन से दूर ट्रेड कर रहा है तो वो खींच के उसको वीक के अंदर ले जाता है। तो दो सिनारियोज हैं प्राइस रिट्रेस करे। सबसे पहले जब भी आप वीक में आते हो, आई मीन कमिंग इनटू द डे, व्हाट शुड बी योर अप्रोच? योर अप्रोच शुड बी, ओके, where the price is most likely going to reach. That's the first thing you have to ask yourself. Where's the price is likely going to reach? Okay, then what do we have here? We have this 4 hour fair value gap formed on yesterday. That could be potentially a drawn liquidity for today, which I do think that can be. But other than that, we also have, other than that, as I said, we have this low, which is like very close. Okay, so first of all, what I would like to see, price go above true open. Okay, because as you can see, we are below true open. Okay, if we are below true open, so first we would expect price to go above the true open। हमारे पास ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जहां पे प्राइस रीच कर सकता है। व्हाट डू वी हैव अदर देन दैट? वी हैव this 1 hour fair value gap, this one, this fair value gap we have। ओके, तो प्राइस क्योंकि बेरिश है, उसके पास एक ड्रॉन लिक्विडिटी है ना, तो हो सकता है प्राइस उतना ऊपर जाकर वहाँ रिट्रेस ना करे और प्राइस इस गैप से रिवर्स कर जाए। बट फिर भी हमारे पास एक सिनारियो क्या बन रहा है? हमारे पास सिनारियो बन रहा है कि प्राइस अगर नीचे कोई क्रैक इन कोरिलेशन बनाता है तो एटलीस्ट वी वुड लाइक टू सी कि प्राइस एटलीस्ट वो ट्रू ओपन के ऊपर जाए, क्योंकि गैप्स यहाँ पे नियरली गैप, अगर प्राइस को नीचे भी एक्सपेंड करना है तो मोस्ट लाइकली प्राइस इस गैप में जाएगा। और
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो we have this high, this low, this high, which is higher than this high. So this is a breaker. Okay, this can be a breaker जो कि डाउन कैंडल से मैच भी कर रहा है. सो दिस कैंडल इज अ ब्रेकर. सेम हियर एसएमटी के साथ बना है, सो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वापस रिवर्स भी कर सकता है. तो we will have to wait because 9:30 is still like a lot of time away. But yeah, this session might be long, but it will be a healthy session, a learning session. ओके, 15 मिनट में चलते हैं. यहाँ पे 15 मिनट में एक टीपीडी बना है, बट 15 मिनट का टीपीडी बिफोर 9:30. The only 15-minute TPD you should trust is what? Where? When? The only 15-minute TPD you should trust is 9:30. Yes, the only one. या तो अगर प्राइस यहाँ पे कोई क्रैकिंग कोरिलेशन नहीं बनाता है और ऊपर चला जाता है और यहाँ पे कोई क्रैकिंग कोरिलेशन बनाता है, देन डेफिनेटली वी विल टारगेट दिस लो एंड अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू गाइस दिस लो एंड दिस लो. तो दोनों साइड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं. तो बस अब वेट करना है थोड़ा सा कि किस साइड प्राइस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है. एंड हमें 1 आवर भी देखना होगा बिकॉज 1 आवर इज द की फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. यस दैट्स ट्रू guys. देखो, आई एम रियली टेलिंग यू, there will be times like, if I would say correctly, if I'll say right, okay, if so, टाइम था यार. अभी से एक हफ्ते पहले आई वॉज फीलिंग सो लो दैट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स. ओके, आई वॉज फीलिंग लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. मैंने अपना घर छोड़ा एंड आई केम बैक. राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई एंड सो ये सब कुछ वाई? बिकॉज फ्रस्ट्रेशन. आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. दैट्स द रीज़न वाई आई एम हियर. बट फिर भी देखो, मैंने सब कुछ किया बट मैंने अपना कभी काम नहीं छोड़ा. ओके, मेरे को काम से अपना इतना प्रायोरिटी है. दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, मैं इस टाइम विंडो को नहीं छोड़ता हूँ. इट डजेंट मैटर क्या काम है, कैसा काम है, बिकॉज आई नो ये टाइम विंडो, ये अपॉर्चुनिटी मुझे वो दे सकता है जो कि शायद मेरे लिए और कुछ चीज़ें नहीं दे सकती. बिकॉज मैंने इस पर टाइम दिया. आई नो माई पोटेंशियल, आई नो वॉट आई हैव गिवन, आई हैव हाउ मच टाइम आई हैड पुट इन हियर. सो या, दैट्स इट. लाइक आई कैंट एक्सप्लेन, बट पास्ट कुछ दिनों में लाइक बहुत कुछ है यार. देखो, कभी कभी लाइफ तुम्हें ऐसे मोड पे ले आएगी जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रास्ता ही नहीं है. बट उस समय क्या करना ना, तुम गिव अप नहीं करना. डोंट गिव अप. उस समय तुम्हें हौसला रखना होगा, उम्मीद रखनी होगी दैट जो भी हो यार, योर माइंड सेट शुड बी लाइक, इफ यू आर ट्रेडिंग, I am a consistent, successful trader. I am a winner. I am a champion. I am a master of my game. I am the best ever to do it. This is how your approach should be in the market. It doesn't matter how much knowledge you have. All that matters if you are putting in the time, if you are learning, if you are focused. That's all matters. Nothing else. क्या है ये सब? कैंडल्स ही तो हैं, बट इसमें क्या है? इमोशंस जुड़े हैं. That's why it feels something and very personal sometimes. बिकॉज या लाइफ जुड़ा होता है इन चीज़ों से. तुम्हारी भी लाइफ जुड़ी होगी. या सो hmm so, right now we don't have anything.
We still have 15 minutes for the market to open. 15 minutes. So we'll have to wait 15 minutes more. देखो, तुम मार्केट में आते हो, ओके, तुम जो सोच कर आते हो उसे अप्लाई करो। अगर वो चीज़ें होती हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो it should not be like you are coming into the market and you thought something else and you are doing something completely differently. Don't switch से क्या होगा, you will get stuck, you will get stuck really. And I think you might have experienced this. So better है एक चीज़ पे stick करो. And yeah. Phew. आज हम लोगों ने लाइव थोड़ा पहले चालू किया है. So yeah, you know our framework, what we are expecting, how we are anticipating. If it's gonna provide us something, surely we're gonna get a shot. If it doesn't, sit on our hands and just wait for another opportunity and maybe another day. It doesn't mean that the market is going to close and so you are just literally trying to force something which really doesn't isn't there, and you're still trying to do it just because you are going to have 2 days of holiday. Okay, someone's asking, Ajay. So he's asking like why you are not going into the 1 minute time frame. Okay, listen. The only time you should ever go to the 1 minute time frame when it's 9:30, because then only the algorithm activates and you will get a very refined entry. It's not कि आप लंदन सेशन या फिर एशिया सेशन में जाकर आप 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को आप आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हो, गोइंग टू टारगेट द एक्सट्रीम लोज एंड सम काइंड ऑफ हाइज. It doesn't work like that. If the algo is there, it's on particular time. That's how I believe. Okay, so see guys, this is something like I would not say I am completely sure about, but market is too close to this low, but it doesn't mean this is the drawn liquidity. So okay, it doesn't matter what market does, and so I'm gonna get this low. No, you have to look at the weekly profiles, what the week is trying to tell you. The whole week has been like fallen, so it can be a retracement. That's what I wanted to say. So yeah, देखो मैं भी घर से इतना दूर यहाँ पे आया हूँ. ओके, पास्ट 2 वीक्स मेरे, like, what would I say, like, I was like, do I really know how to trade? I questioned myself, but then I realized that yeah, I have achieved that kind of consistency. I have my back tested data. When I look at that, I say to myself like, hold on, hold on, bro. What the fuck are you even anticipating and thinking about yourself? You are the one who had killed it. Literally, have the achieved that kind of consistency that many people ever dreamed of. That was the time I realized that no, it doesn't matter. Let's switch the place. So I came to Mumbai, and this is what I'm doing again. If the plan doesn't work, I will change the plan. That's a quote. If the plan doesn't work, then change the plan, not the
goal, kind of like that. Yeah, सपने। हम्म, देखो सपने सबके होते हैं, एंड व्हाट आई बिलीव, पूरे उसी के होते हैं जो हार नहीं मानता है। दैट्स द ओनली रूल। आई डोंट केयर how much effort timing you are giving. Sometimes people get it quickly, sometimes it take time, and no one can answer why it happens. A lot of people will say that कि शायद उसने हार्ड वर्क ज़्यादा किया होगा, उससे क्लैरिटी ज़्यादा आया हुआ होगा, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। नहीं आप डिसाइड कर सकते कि आपको किस टाइम पे आपका गोल्स अचीव होगा। यू कैन नॉट पुट अ टाइम लिमिट ऑन द सक्सेस। So if we get a, some kind of manipulation towards the lows, then we will expect a retracement, and the retracement will be like, the retracement will be like back in the 1 hour fair value gap. And yeah, if it doesn't, then what can we do? Nothing. Like past kuch weeks se by index futures, like what can I say, there was a time like I was literally sitting for like 30 to 40 minutes and I was getting very clean and consistent setups. And look, this is a time that I can't explain, bro. Sometimes it's okay. Um, so you are asking what is your approach coming into a day? Okay, so my approach is, where are the monthly? First of all, you should, what you should do coming into the day, where is the high, low and gaps, the highs, lows and the gaps. Okay, क्या यहाँ पे मंथली में कोई गैप्स है? नो, ओके, बट यहाँ पे लो है एक, हाई वहाँ पे है, तो आप हाइज और लोज को मैम मार्क कर सकते हो। देन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम यू डू द सेम थिंग, एज आई हैव ऑलरेडी mark this low because this low is already breached and price is so close to this low. I mark this one. This is also a liquidity pool, and this is previous month low. So you mark the, coming to the day, you should mark the highs, lows and gaps of previous month, weeks, days, 4 hours, 1 hours. That's it. 15-minute time frame gaps forms everywhere. You don't need to like mark every time, but if you are trading the session you should mark that, because that can be a point of interest where from where the market is going to reverse or retrace. Keep in mind. Yeah, this is market. मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है. It's completely illogical to say yeah this is completely going to happen. No, अभी आएगा ट्रम्प बाबा, Powell. Powell can just complete say Powell can just come and say simply something about the rate cuts and the market's just gonna collapse or it's just gonna rally. So there's nothing like 100% probability. It's all about probability. The game is all about probability. So you should accept the fact. If you're not accepting the fact, then the malintervention is gonna really kick you out of the market. Yeah, this lows looks clean, but yeah, we'll also have to see about the highs, because market is not going to just, if the drawn liquid is this one, the market is not gonna just completely go into that low by just within one candle. It's gonna retrace. That's the algorithm. And where it is going to retrace? Highs, lows, gaps.
Most likely gaps. That's why I told you guys to mark the gaps. You should always prioritize gaps more than highs or lows, because market likes to fill imbalances quicker than taking out liquidity. It rebalances faster because it is algorithm. Repricing. 925. Neither we have SMT or anything. Let's just wait. Hmm. Hmm. पहले 830 भी सेटअप्स क्रिएट करता था, न्यूयॉर्क वाज जस्ट एक्सपेंशन. होता है, हर टाइम प्राइस एक्शन एक जैसा नहीं होता है. I'm sure they again the time will come when 830 will again just expand, and New York will likely be a consolidation. I mean the 930. Until the 930 happens, we should just have to wait. It's not you should. I mean, yeah, you can. Remember, the only thing that you have to focus coming into the day is the highs, lows, and the gaps. Nothing else matters because the algorithm sees only two things. It's either is going to rebalance or it's going to take out the liquidity, which is in the forms of highs, lows, and one minute away from the equities open. If it's
if it manipulates to the upside, then I already told you what we need to focus on, the gap, right? This one. But I would like to see any one of the asset to like go above the true open and then form some kind of Kraken coalition. Then we'll anticipate the sell towards this liquidity pool. And the S&P 500, or you can say yes, is surely the one who is like going to literally smash the slope. Okay, equities open happen. Okay, now we will have to see. Just now we can go into the 15-minute time frame. Let's see. Let's see. Okay. Okay, so all of the assets has taken the Q2's low. So right now I am not expecting price to again go to the upside. It might be a continuation. Okay, this is an SMT that has formed here. Dow Jones के साथ. So we have SMT with Dow. प्राइस अगर ऊपर साइड मैनिपुलेट करता तो कुछ बनने का पॉसिबिलिटी होता. देखते हैं. That's why I say like all you have to do is just wait. That's the only thing that we have right now. क्रैकन कोलेशन तो बन चुका है, बट डाउ के साथ कुछ भी क्रैकन कोलेशन बनता है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ क्रैकन कोलेशन डाउ के साथ. मैं हमेशा वेट करता हूँ दो चीज़ों के होने की, लाइक कंफर्मेशन. either it will be a low time frame SMT that should be sequential, or TPD. Oops. Oh, that's true. Okay. hmm. Q2 का हाई, और तो और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है अगर आप देखोगे तो. The type of price action that is right now, you shouldn't just trust it.
नहीं, आई थिंक प्राइस इसको ले लेगा, उसके बाद ही कुछ बनाए। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ओके, लेट्स एक्सप्लेन ICT order block in a complete right way. Okay, so see, for order blocks what you will have to do, order blocks जब भी आप देखते हो, तो order blocks जब भी आप देखते हो, you will have a down candle like this if you are looking for upside, and then you will have एक ग्रीन कैंडल जो कि इस डाउन कैंडल को completely डिसरिगार्ड करते हुए एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोड्यूस करेगा, जो कि होगा इस कैंडल का हाई, नॉट दिस वन, दिस वन। And then when price will come back, and all this should happen after taking liquidity. So this should be like this, that price has taken out this liquidity, forms an order block, expansion, and then price comes towards again into this candle and just expands. This is how ICT's perfect order block is, the real order block. And if the price action forms an SMT, that's just too good. So as anticipated, price is taking out this low and there's nothing we can do, yeah. But price जब इसको ले लेगा, then surely यहाँ पे एक SMT create होगा और वहाँ पे हमें कुछ दिख सकता है। क्योंकि देखो, ड्रॉन लिक्विडिटी तो प्राइस मीट करेगा, दैट इज श्योर, क्योंकि SMT फॉर्म कर चुका है। इट्स जस्ट कि हमारे पास एंट्री नहीं है, या इट्स जस्ट we don't have entry। 9:30 जस्ट ओपन हुआ, ओके। 7:30 ट्रू मार्केट सेशन ओपन के ऊपर डाउ के साथ क्या कर सकते हैं? नथिंग, नथिंग, नथिंग। लेट्स वेट, प्राइस इसको ले रहा है। there may be a possibility that Nasdaq can also take out this low. Okay, literally ES just smacked that low. That could be potentially a SMT formation, that which will not be sequential, but still that can play importance. If we form somewhere some kind of something, anything which was suggesting, which would suggest us higher prices, we will go for it, because this is a clear SMT. Because the same load that was taken out here in the ES is not on the NQ. Now you know like why I usually look at the triads like this, because it's just becomes so easy to look at the intermarket relation between the different triads. Now the question is, would you like
You all were watching this. Would you be the one who would like to enter right at the equities open when price formed this incentive with the Dow? That's the question. Would you be the one? Because 9:30 happened, formed the SMT, one favorable gap, all asset classes, and just price, you can see, reversed. Not reversed, continued toward the sell side liquidity pull, which was there. Would you be the one to do it? Ask yourself. Anything that forms below the true open, it's hard to trust. That's all I can say. 4 मिनट बचे हैं 9:30 में. 15 मिनट तो प्ले इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करेगा, आई डोंट थिंक. But there can be something on the Q3 and Q4. Yeah, like if you were really sure about this, then you might have participated. I wasn't, that's why I didn't. Equities open, it's like really fast. Now we will have to see what happens between the Q2 and Q3 of the micro, the macro, the ICT's version. Macro, what I call it micro. If something forms in here with a clear kind of gap, I'll look to target this as again. Mm, it's 9:43 and the Q3 will begin at 9:45. 2 minutes. Now we have the framework. What is it? Now we have the clear cut, not in this country. We have the clear cut, this is empty, which is formed here. This is how a framework should be. And until this holds, we can expect a retracement or a reversal. If it's a retracement, it's going to target gaps, the most recent gaps. Where is it? Remember the 1 hour favor that we were talking about in the initial time when we started this stream? That's where you should ideally focusing on coming into the day. Gaps, right?
Okay, Q3 is just begin now. All we have to wait a Kraken coalition. As the name it is, CIC trades. Not every day. If there is nothing, then there's nothing. You can't be like, okay, I have to do it right now. You just can't. As I said earlier, there is nothing certain about this. It is completely random. We are just here to predict. Okay, just focus here. If we get a Kraken coalition right now, right here, into the Q3, we are literally going to target the unsymmetrical highs which was really formed above in the initial phase of this Q2. Patience, guys, patience. What's the factor that separates from you to a person who is successful? Patience. Yes, that it is. Patience. You might see the lifestyle of others and you are thinking that, okay, that guy is living the life I always dreamed of, but you didn't know how much hard work he had gone through. नहीं, कोई क्रैकिंग कोलेशन नहीं। सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं, नया गैप से कुछ भी नहीं है फिलहाल तो।
Uh, uh, uh. Consolidation. Hmm. 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 We don't have anything right now. We are waiting for any of the asset to take out the low, and we will be in tune with the order flow. एवरी टाइम यार. पता नहीं, हर बार Q3 क्या दिक्कत है Q3 को. एक बार का नहीं है, हर बार का है Q3. हर बार. पहले ऐसा नहीं था. सही बता रहा हूँ. Earlier Q3 was like, okay, this is go to. Again consolidation. Yeah. क्या बोलें भाई. फिर वीडियो लंबा हो जाता है ना. And when I upload it, like you will be like, this much long video. सिंगल एक ट्रैकिंग कोलेशन पे तो नहीं कर सकते ना यार. अगर डाओ भी बनाता है then there is also a chance, but देखते हैं. कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग. कुछ देख के क्या करेंगे. कुछ भी नहीं है अभी. इथीरियम. इथीरियम as you know सेकंड लार्जेस्ट एसेट है भाई. XRP क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है. टू मच. 5 minutes left for the 10 a.m.
वेट तो करना पड़ेगा। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, मैं भी कैसे बोल दूँ ओके जस्ट को। अब वेट करना पड़ेगा भाई। देखो माइक्रो, अब माइक्रो में बनता भी है तो आई डोंट नो आई विल ट्रस्ट इट और नॉट। आई डोंट थिंक अब माइक्रो कोई काम का है। 10 बजने वाला है। 10:30 तक यस बिल्कुल। कुछ भी नहीं है भाई, क्लियर कट लिक्विडिटी है सेल साइड। इट्स जस्ट क्लियर लिक्विडिटी। जब जब लगे दिस इज द एंड, ऑलवेज रिमेंबर, एंड भी एक नया बिगनिंग होता है। जहाँ से आप ख़त्म करोगे वहाँ से कोई शुरू भी करेगा। नेवर, just don't think about this is the end, this is all I have, no। रुको, टाइम लो, रीस्टार्ट, fuck it, what others say, restart, take your time, come back harder, stronger। Now I am not expecting Q2 Q3 क्रैकिंग कोरिलेशन। एंड होने वाला है Q3 का, बनेगा भी तो आई डोंट थिंक Q3 लो विल होल्ड ऑन ऑल दी ऐसी क्लासेस। डू वी हैव TPD? नो, वी डोंट।
टीपीडी नहीं है। अह, मेरा बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया? क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। आई एम आउटसाइड। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, सो आई एम नॉट इन द होम। आई एम राइट नाउ लिविंग इन मुंबई। Came here, visited. I don't know what was the reason, but somehow I just came here. Um, mm, mm, यही होता है। क्रैकन कोलेशन बनेगा, उसके लिए आधे घंटे और लगेंगे। लाइव एक्सक्यूशंस कैसे शो करूँ मैं? कैसे शो करूँ? जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रीम 30 मिनट्स और एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर मेरे को वो शो करना है एग्जीक्यूशन लाइव का। तब जाके किसी मे भी ये हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिटवीन Q3 एंड Q4। या जब तक Q4 एंड होगा तब तक तब तक 90 मिनट का Q4 आ जाएगा। Shaving habit, nails. That's actually a bad thing. ये वीडियो लंबा होते जा रहा है। That's why I always start around 9:30.
एक लिक्विडिटी पॉइंट रीच हो चुका है, दैट्स व्हाई प्राइस इज बिकमिंग स्लो। बट न्यूयॉर्क का हाई, व्हाट अ लिक्विडिटी पुल, आई मीन व्हाट अ लिक्विडिटी पुल इज दैट इज। मे बी, शायद ना बने, बिकॉज Nasdaq अब इस लोस को अगेन टारगेट करने जा रहा है। ओके, नथिंग फॉर द डे ब्रो, नथिंग। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बना। प्राइस ने लिक्विडिटी पुल को स्मैश कर दिया। माइक्रो साइकिल पे मैं ट्रस्ट नहीं किया, ट्रस्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट आई थॉट इट विल जस्ट बी अ मैनिपुलेशन। बट अब प्राइस में बैठे रहना एंड थिंकिंग दैट या प्राइस विल डू समथिंग, दैट्स जस्ट आई थिंक completely waste of time. So yeah, this is what it is for the day. We'll come back again next week. Try to see if price forms something. um, right now I don't think we have anything of framework. We do have SMT between डाउ के साथ है SMT, बट TPD नहीं है। अगर वो कैंडल TPD होता, ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता वो। So Nasdaq, I think price going to target that low. ये लास्ट ट्रैकिंग पोजीशन बना है, ये डाउ के साथ है, एंड दिस कैन बी ट्रस्टेबल। अगर प्राइस रिट्रेस करता है एनी ऑफ द गैप्स, I'll be in. We just can't be sitting all day here. दो क्रैकिंग पोजीशन चाहिए था, हमें मिल गया है। Retracement into the gap will be in. Shit, shit, shit. Um, mm, mm, mm.
internet connection, connectivity. Uh, uh, uh. Okay, most likely stop loss. This is not the entry. Just a scenario that it can. After that big SMT, we have just a small one. Okay, retracement into the fair value gap. Let's get in. Stop loss. Yeah, we are in. We are in.